Hello. Is it audible? I hope it's audible. Now, let's see. Sounds, yeah, that's perfect to be honest. Let me see. Like, can we? That's the thing. So, hi everyone. कैसे हो आप सब? I hope it's audible and visible at the same time. Let me just check once. Okay. So, hi everyone. Welcome to YouTube channel Classes with me. कैसे हो आप सब? Hi everyone. Hello. Hi everyone. कैसे हो आप सब? वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्लासेस विथ मी. कैसे हो? Just, yeah. So I hope I am audible right now. I hope I am audible. Yeah, I think I am audible right now. चलो बढ़िया. So let's start with today's assignment. ठीक है. Let's start with today's assignment, and if you have not checked my data science project, please go and check this out. This is my data science project which I have uploaded today, actually on first of every month. The thing is, on first of every month, let me just write it. On first of every month we upload project videos, right? So that's the thing. Today is 1st of April and we have uploaded project video on our YouTube channel. Please go and check that out. Also, let me tell you one thing. If you want to add those projects in your CV and resume, you can go with that. Okay? Projects can be added in your CV and resume. No worries about it. You can add those projects in your CV, resume. Correct? That's the thing. So let's continue with today's assignment. Like, we were on assignment number 4, I guess.
Yes, assignment number 4 we were there, and we have done till question number 3 what I believe. ठीक है, so assignment number 4 question number 3 we have already done. Right now we will continue with the new questions like question number 4 and above. ठीक है, so also in this live stream we will be clearing doubts, some queries related to SQL, related to Python for data analytics, and related to BI tool that is Power BI. ठीक है, so you can also ask your doubts here, no worries about it. I am ready to help you out in this. So anybody have any doubts till now, you can ask your doubts. Apart from that, let's just a minute, let me just check is everything good to go. Let me check once. Yeah, done and dusted. So till here, anybody have anything you need to ask, you can ask your doubts, no worries about it. I'm there to help you out. And let me check once. Just a minute. Okay, so let's move to today's question, that is question number 4. So in question number 4 what we have, question number 4 में क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने से क्या पूछा गया, लेट्स गो एंड चेक दिस आउट. सो इन क्वेश्चन नंबर 4 they have asked for, just a minute, they have asked for to write a query to print the cashier location and average employee points in cashier location. मतलब कैशियर लोकेशन तो एक प्रिंट करना ही है अपने को आउटपुट में, और कैशियर लोकेशन के साथ उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ का एवरेज पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो इस पर कुछ कुछ चीज़ें कनेक्टेड हैं. अगर ड्राई रन किया जाए तो ड्राई रन के सिनेरियो में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कैशियर लोकेशन का रिक्वायरमेंट चाहिए. आफ्टर कैशियर लोकेशन उसमें जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एज पर दैट कैशियर लोकेशन, उन एम्प्लॉय पॉइंट्स का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, राइट. और कुछ दिया हुआ है अलग, लेकिन जो एवरेज हम लोग फाइंड आउट करेंगे उस एवरेज को फाइंड आउट करने के बाद उसको टिल 2 डेसिमल पॉइंट्स उसे आउटपुट में निकालने वाले, राइट. आई मीन टू से अगर इस तरीके से हो रहा है 234.762.183, तो हम लोग क्या करेंगे, टिल यहाँ तक निकालेंगे 234.76, मतलब टिल 2 डेसिमल पॉइंट्स, दैट्स इट, राइट. तो हमारा टास्क आज के लिए इतना है फॉर क्वेश्चन नंबर 4. अब लेट्स सी क्या क्या टेबल से हमें ये आंसर मिलेगा, वो हम लोग अभी चेक करने वाले. तो टिल हियर किसी को कुछ डाउट रिलेटेड टू दिस, किसी को कुछ डाउट फिलहाल के लिए, तब तक मैं आता हूँ जस्ट फॉर 5 minutes. इन जस्ट 5 minutes लेट मी ज्वाइन बैक.
तो लेट्स गो टू आवर सीक्वल इन्वायरमेंट और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, राइट। सो क्वेश्चन नंबर सॉरी 4 फॉर असाइनमेंट नंबर 4, लेट्स स्टार्ट। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब हम लोग पहले टेबल देख लेते हैं, कौन कौन से टेबल में हमें क्या क्या डिटेल मिलेगा, ठीक है। सो एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा दिया गया है, एज पर क्वेश्चन, लेट मी चेक वंस, सब सही है तो साउंड्स वगैरह। सो एज पर क्वेश्चन हमें बताया गया है कि कैशियर टेबल और फीडबैक टेबल से हमें डिटेल मिलेगा, ठीक है। तो कैशियर और फीडबैक टेबल से हमें डिटेल मिलेगा, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस एंड सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। अब देखते हैं फीडबैक टेबल से हमें क्या क्या डिटेल्स मिलेगा। फीडबैक टेबल से हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पे एम्प्लॉय पॉइंट्स, जो कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें एवरेज निकालना है एम्प्लॉय पॉइंट्स का, और कैशियर आईडी, बट हमें कैशियर लोकेशन चाहिए। अब देखते हैं कैशियर टेबल में क्या क्या है। ओके, तो कैशियर टेबल में अपने पास कैशियर आईडी और लोकेशन है, और फीडबैक टेबल में अपने पास क्या है, कैशियर आईडी और पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या है कि कैशियर आईडी जो है वो मैच कर रहा है, विच इज़ अ कॉमन टेबल, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों टेबल को ज्वाइन करने वाले हैं विथ अ कॉमन कॉलम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग, एक मिनट, हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जॉइंट्स, एंड जॉइंट्स में हम लोग जो कॉमन, सॉरी, कॉलम यूज़ करेंगे वो क्या रहेगा, कैशियर आईडी, ठीक है। कैशियर, ए हाय हाय ब्रदर, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। हाय ब्रदर, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। So right now what we will do, we will join two tables right now with a common column, and that column is what, cashier id, ठीक है। So once we will join it, we will get all the data from both the tables, all data from both the tables, and from that data we can find the answer, ठीक है। सिंपल एज इट इज, ठीक। लेट्स गो टू दिस देन, लेट्स गो टू दिस, लेट्स join it from this, let's give a alias of b, and I will do what I will do here, I will do full join b on a dot cashier id equal to b dot cashier id, ठीक है। So a dot cashier id and then b dot cashier id, that's it. We will do these two things, ठीक है, and let's execute this. So once we execute it, what do we get, we have done full join, we have got the cashier location at side of the table, ठीक है। So we have received what, we have received cashier location here, ठीक, simple as it is, right। What we have received, so we have received what, let me write it here, just 1 minute, let me just keep it. So we have received data related to both the table. So table 1 data plus table 2 data, and from both the table what we can do, we can get cashier location plus average of employee points, ठीक है। we can get what, we can get cashier location
and average of employee points. ठीक है, that's the thing. So let's see from these two things what else we can get, and also we need to take care of decimal points as well. मतलब till 2 decimal points we need to take care of. ठीक है, let's go to this and let's write everything related to a dot cashier b dot cashier location, because it was available in table B. And after that we can write average of a dot employee points. ठीक है, as average employee points. ठीक है, that's the thing. And we have used the aggregate function, so we will go for group by b dot cashier location. ठीक है, and let's execute it. So once we have done the execution part, हमें क्या मिल रहा है? Once we have done the execution part, we are receiving lots of numbers, I mean digits after the decimal. So we will use what? Round of this, and that should be till 2 decimal points. ठीक है, and let's execute it again. See, we have received the data. ठीक है, this is how we have done with the output. ठीक है, we have received the data. We have seen 70.00 cloth location, 60.00 veg location, non-veg eatery, all those stuffs. ठीक है, that's the thing, right? So anybody have any doubts till here related to this? Anybody have any doubts? You can clear your doubts. ठीक है, till here if you have any doubts for this question or for SQL or for Python, for data analytics or Power BI, just ask your doubts and I am ready to help you out for this. So anybody have any doubts related to this? Anybody have any doubts till here? Please ask your doubts. So please ask your doubts. Like anybody have any doubts in the live stream, please ask your doubts. So let's see. Let me refresh this in case.
Okay, so let's move to the next question, which is question number 5. So what we have in question number 5? In question number 5, we have to write a query to find the total sales in two decimal points, right? And total quantity for return orders. So here we need to find out two aggregate function. I mean two aggregate requirements related to sum of sales and related to sum of profit. ठीक है. So sum of sales and sum of profit for what term? For return orders. ठीक है. For which orders? For return orders. ठीक. So here earlier what we have seen, there are two tables, right? First, the main table where all the order IDs are there. Second is what? For the return table, right? So from return table and from main table we will connect with one common column, that is order ID, right? From there what we will get? At least we will get all those order which are return and which are in non-return category. And once we receive this, we can easily take the sales and the profit sum. ठीक है. And after getting that, we will do use round for two decimal points. Simple as it is, right? So till here, anybody have any doubts till here? ठीक है. Any doubts till here, right? Then we can move to the question. I mean in the SQL environment, right? So let's do one thing. Let's start with the like we have done the dry run with the whiteboard, I mean in the notes, and then we will now do the same thing here in SQL environment. So let's write it. Let's see this out, what it is all about. Select everything from 7 11 store A. I will do full join. ठीक है. सेवन 11 return B on A dot order ID equal to B dot order ID. Simple as it is. Right now I will execute it. So here what I will receive? I will receive all the datas which are available here. ठीक है. All the data which are available here. ठीक. In null values and in not null values. So what does null value represent? And what does not null value represents? ठीक है. Null value represents those values which are not returned. Not null values are those values which are returned, right? Why null values are not returned? Because from both the tables, if you see, if the order IDs are not matching, then we get null data, right? Simple. If from both the table order IDs are matching, then we will get the data. ठीक है. So that data is available, so it is directly or indirectly not null value. If data is not available, obviously it will be null value. Simple as it is. And here what join we have done? We have done full join here. ठीक है. Full join, all the values will be there in the output. ठीक है. Left join, only left table values are dominating. Right join, right table values, and only join, or also known as
inner join, we will get all the values which are common in both the table. Simple. So we have done full join here, and let's move to the SQL environment for now, and let's work on that. So till here we have done. Right now we will say the data which are returned. So return data matlab which are not null. So we can say like this, where b dot order id is not null. Simple, and execute it. Earlier how many rows are there? 9994, and right now how many rows will be there? 800. Okay, simple. Right now we will write what there was total sales for return orders. Okay, and total quantity for return orders, total sales and total quantity. To find total sales into decimal point and total quantity in return orders. ठीक है, let's write b dot order id here. Simple. Then we will write sum of sales alias we will give return order sales. Then we will write sum of a dot profit as return order profit. ठीक है, that's the thing. And here we have used aggregate functions like sum, min, max, all those. So we will use group by here right now. ठीक है, group by what? b dot order id. ठीक है, b dot what? Order id, right? Now let's execute this. And once we have done the execution part, what we have find out? We have find out the output for return orders and profit both. ठीक है, that's the thing, sales and profit. So write a query to find total sales into decimal point. Okay, right now what they have told for 2 decimal point. So we will do round here, round of this, and how many decimal point? 2, and round of this, how many decimal point? 2 decimal point, and execute it. So here they are saying double precision integer is there. What we will do? We will simply change the data type to numeric. Same thing we will do here. ठीक है, numeric. ठीक, when like this kind of scenarios comes into picture or comes into error, just do this, and then we will get the output. Simple as it is. ठीक है, see, we have received the output as well. We have seen related to the return orders, as well as we have seen related to return orders profit. ठीक है, simple as it is. We have received the data for that. So here what things we have used? We have used the not null ka logic and techniques. We have used group by, we have used round, and also we have used sum, right? So till here, anybody have any doubts in the live stream? Please ask your doubts. ठीक है, please ask your doubts till here. Or if you have any other doubts related to SQL, related to Python for data analytics, related to Power BI, you can ask your doubts from there as well, right? So anybody have any doubts still here? Please ask your doubts. Anybody have any doubts till here? Please ask your doubts in this. So let's see, let me refresh once.
and if everything is okay, let's do the refresh and then we will see. So anybody have any doubts till here? Please ask your doubts. Anybody have any doubts till here? Please ask your doubts. So anybody have any doubts in the live stream? Please ask your doubts. ओके देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है अपने पास, अपने को एक क्वेरी लिखना है. वी हैव टू राइट अ क्वेरी टू प्रिंट कैशियर लोकेशन वेयर नन ऑफ द एम्प्लॉय हैव सेम पॉइंट्स. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं एक बार ड्राई रन करके. ड्राई रन में हम लोग क्या समझेंगे, सपोज कैशियर लोकेशन है इस तरीके से. मैं ज़्यादा कैशियर मतलब छोटा ही टेबल बनाऊंगा. कैशियर लोकेशन 1, कैशियर लोकेशन 2, कैशियर लोकेशन 1, कैशियर लोकेशन 2 एंड कैशियर लोकेशन 3. ठीक है, सो 1 में एक एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉय पॉइंट्स 30 है. कैशियर लोकेशन 2 में 20, 1 में फिर से 30, 2 में 40, 3 में 60. तो यहाँ क्या पूछा गया क्वेश्चन कि आपको कैशियर लोकेशन प्रिंट करना पड़ेगा जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयज़ के पास सेम पॉइंट्स नहीं है.
तो अगर हम लोग कैशियर 1 देखें तो कैशियर 1 के पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, 2 एम्प्लॉयज़ हैं और दोनों के कितने पॉइंट्स हैं, 30 है, जो कि सेम पॉइंट्स है। कैशियर लोकेशन 2 में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, सेम 2 एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन दोनों के पॉइंट्स कितने, 20 और 40, ठीक है। कैशियर लोकेशन 3 में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, एक एम्प्लॉय और कितने पॉइंट्स हैं, 60। तो यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, ओनली कैशियर लोकेशन 2 and 3, कैशियर लोकेशन 2 एंड कैशियर लोकेशन 3, बस यही दो कैशियर लोकेशन अपने आउटपुट में आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि यही दो कैशियर लोकेशन में ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो हमें वही लोकेशन को फाइंड आउट करना है जिसके पॉइंट्स आर नॉट मैचिंग, ठीक, सिंपल एज इट इज। अब क्या करेंगे, लेट्स गो एंड फाइंड द आउटपुट। फ्रॉम कहाँ गया, this and this on a dot cashier id equal to b dot cashier id, ठीक है। एग्जीक्यूट कर दिए, डेटा आ गया। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, कैशियर लोकेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और उनके पॉइंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैशियर लोकेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, बी काउंट ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे, तो ए डॉट एम्प्लॉय आईडी एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंट ऑफ एम्प्लॉय पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स एज पॉइंट्स काउंट, ठीक। अब यहाँ पे हमने एग्रीगेट फंक्शंस मतलब फंक्शंस लिखे दैट इज काउंट, तो ग्रुप बाय लिखना पड़ेगा। सो ग्रुप बाय बी डॉट कैशियर लोकेशन, राइट। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ देखो हमारे पास जो डेटा है उससे हम लोग क्या मालूम चलता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उतने पॉइंट्स यहाँ पे, मतलब एक एम्प्लॉय है तो 1 पॉइंट, मतलब 1 नंबर ऑफ पॉइंट, सेम 4 4 एंड ऑल। अब मैं अगर बोलूँ कि मैं काम करता हूँ, जितने डिस्टिंक्ट पॉइंट है सिर्फ उनको काउंट करता हूँ, ठीक है, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट एम्प्लॉय पॉइंट्स, ठीक। अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट में। अब यहाँ पे हमें क्या शोकेस कर रहा है कि जहाँ पे 1 है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, वहाँ पे पॉइंट्स भी एक ही है, ठीक है, मतलब एक एम्प्लॉय का एक ही पॉइंट रहेगा, राइट। 0 एम्प्लॉय 0 पॉइंट्स। नॉन वेज सेक्शन में आप देखो 4 एम्प्लॉयज़ है लेकिन डिस्टिंक्ट पॉइंट काउंट 3 है, सेम फॉर द वेज लोकेशन, ठीक है। अब इससे क्या मालूम चलता है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या, जो यूनिक डेटा है वही आउटपुट में शोकेस करेगा, सिंपल एज इट इज़, जो यूनिक डेटा है, ठीक। मतलब अगर मैं इस तरीके से लिखूं, टेबल में इतने डेटाज हैं, सपोज 10 10 20 21 30, और यहाँ मैं लिखूं काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट देन दिस कॉलम, तो क्या आएगा आउटपुट में, कितनों का काउंट होगा, 10 20 21 30 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। बट एक्चुअल कितने हैं, 5 डेटाज है, बट यहाँ पे आउटपुट 4 आएगा क्योंकि मैंने डिस्टिंक्ट काउंट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ हैं और डिस्टिंक्ट काउंट 4 है, ठीक है, सपोज एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय 4 एम्प्लॉय 5, ठीक है।
अब यहाँ पे इतने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉयज़ 5 है बट पॉइंट्स अगर 4 है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ का जो पॉइंट्स हैं, एम्प्लॉय पॉइंट्स, इट माइट बी सेम। तो हियर वी कैन से वन थिंग, count of employee, if it is equal to count of distinct point, then it is satisfying our requirement, that's it, ठीक है, that's the thing। अब यहाँ पे तो हम लोग लिख दिए ग्रुप बाय। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हैविंग। क्यों हैविंग लिखेंगे? क्योंकि हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस के रिक्वायरमेंट्स को। तो जहाँ पे भी एग्रीगेट फंक्शंस है, जैसे काउंट हो गया, ये सब काउंट, मिन, मैक्स, उसमें अगर कुछ फिल्टर लगाना है आपको, तो आपको हैविंग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हैविंग दिस इक्वल टू दिस, और मैं यहाँ कर रहा हूँ एग्जीक्यूट। अब यहाँ देखो आउटपुट में क्या आ रहा है। तो क्लॉथ्स, क्लोथ, ईटरी और नल, मतलब जो लोकेशन नहीं है, वहाँ पे पॉइंट्स सेम आ रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय और पॉइंट्स सेम आ रहे हैं, तो वही होगा अपने आउटपुट में, ठीक है। दैट्स द थिंग, सिंपल एज इट इज़। तो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हो लाइव स्ट्रीम में। एनीबडी हैव एनी डाउट्स टिल हियर इन द लाइव स्ट्रीम, प्लीज़ आस्क योर डाउट्स। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो लाइव स्ट्रीम में, प्लीज़ आस्क योर डाउट्स टिल हियर। किसी को कुछ भी डाउट हो टिल हियर इन द लाइव स्ट्रीम, प्लीज़ आस्क योर डाउट्स। Anybody have any doubts still here in the live stream? So anybody have any doubts still here? Anybody have any doubts? So you can ask your doubts, like anybody have any doubts?
So anybody have any doubts till here? Anybody have any doubts? Okay, so let's move to the next question. That is question number 7. And you can also ask your doubts after that. No worries about it. So let's move to the next question. That is question number 7. In question number 7, what we have, we need to write a query to find the subquery where we have all three kinds of returns, like bad quality, others, and wrong item. Okay. Let's see actually how many types of returns are there. Let's check that out. Okay, this is the thing, and we will just do distinct of return reason. Okay, from this, let's execute this. What we have, we have wrong items, others, and bad quality. So these three things would be there. That's it. And only these three return reasons are there. There is no additional return reason in this. Okay. So let's check this out. Subcategories where all three return reasons would be there. Okay. Let's go with this. Select Seven Eleven store A, and then we will write related to full join this B on A dot order ID equal to B dot order ID. Okay, simple. And let's do the execution part. So here what things do we need? We need subcategory part. Okay, first thing first, subcategory. Then we will do count of return reason. Okay, as return count.
ठीक. And here aggregate function is there, so group by a dot subcategory, ठीक है, and execute it. So what things, oh sorry, we have seen this many return reasons are there for each subcategory. But do we need all those things? We need to take care of only this three return reasons. So let's write distinct with this and see do we receive any output here. In this what we have seen, these are the distinct part, and simply we will say having this equal to 3, because these are three return reasons, right? And once we execute it, these are the subcategories having all these three return reasons, right? If we keep this away as well, let's remove the distinct part. And let's execute this. There are actually 21 subcategories, ठीक है. And then if we write distinct of this and this, we have only 12. So out of 21, 12 subcategories are those subcategories which are having this three return reason, that is bad quality, others and wrong item, ठीक है. That's the thing. So till here anybody have any doubts? Till here you can ask your doubts related to this. Anybody have any doubts till here? You can ask your doubts. So let's see, anybody have any doubts till here? So okay, then let's move to question number 8 for now, and let's see what questions do we need, I mean what requirements do we need to take care of. In question number 8 we need to find out the city where not even a single order was written, ठीक है. Let's see what it is all about, ठीक है. So it is city is given right here, ठीक है. Suppose I write like this, let me just city and number of orders, ठीक है. So city 1 having 2, city 2 have 0, city 3 have 4. So in this way we can say like city 2 have 0 return orders, ठीक है. So in this way city 2 will be there in the output. So in this way what we can do, we will connect first both the tables, right? Two tables will be connected, I mean joined, using a common column. So once it is joined, we will directly say कि where, not where, but having count of order ID equal to 0. That's it, and we will get the output, ठीक है. This is the thing.
So should we move to this SQL environment and see what it is all about? How can we actually do that in the SQL environment? Select everything from A, then we will say full join seven 11 B on A dot order ID equal to B dot order ID. ठीक है, first this is the basics part, we have done the execution of it. Then what we will do, we will directly write B dot order ID, then wait, city have been told, okay, so A dot city, then we can say count of B dot order ID, ठीक, as order count, and after that we will do group by A dot city, and when we execute it, this is what we have returned with. We have returned with city, and after that we have returned with order count and all. Simple, we will use this having count of this equal to 0, and when we execute it, we are left with 360 cities where, let me write, there is 0 return orders, right? That's the thing. So what we have done, we have just used group by, and we have used the having clause, and in that we have used count, like we have given the filtration part using having, we have just given count of return order IDs should be equal to 0. That's it, right? So till here, anybody have any doubts till here? Please ask your doubts. Anybody have any doubts till here? Please ask your doubts in the live stream. Anybody have any doubts till here? Please ask your doubts. Anybody have any doubts till here? Please ask your doubts. Okay, so now let's do one thing. Let's move to the next question. That is question number 9. And let's see what we have in question number 9. In question number 9, we have to write a query to find top 3 subcategory by sales of return orders in East region. So here there are lots of filtration that has been given in the requirement. Lots of filtration part. So what filtration have they asked for? It is related to first thing first, related to subcategory. This is the first filtration, ठीक है? Let's see after that what we have.
then we have the second part of it, subcategory. Then we need to find out the sales as well. And what's the third filtration we need to take care of? Third is return orders from east region. ठीक है, just a minute. Third we need to take care of return region, return from east region. ठीक है, so here we need to so here we need to take care of three things. ठीक है, three requirements. What requirements we need to take care of? Subcategory. Subcategory is connected to what? Sum of sales. And all these things is connected to what? All these things is connected to region, and the region should be what? East region. ठीक है, that's the thing. So let's see how can we find the solution for this, right? Till here anybody have any doubts? Till here they can ask your doubts. Like anybody have any doubts till here, please ask your doubts in this. So anybody have any doubts still here, please ask your doubts. Anybody have any doubts still here? You can ask your doubts. Okay, then let's move to the SQL environment for this. So in this, what things, what tables we need to take care of? We need to take care of select everything from the main table, that is 7. 11 store. Then let's do full join for 7. Red B on A dot order ID equal to B dot order ID. ठीक है, simple. Let's execute it. ठीक, and let's talk about the subcategory. Because we need to take care of the subcategory part. ठीक है. After this, what we need to take care of? Sales part. ठीक है. We will do sum of sales.
sum of a dot sales, ठीक है, as total sales. After that what we need to take care of, we need to take care of the region, ठीक है. Let's first do this and let's do group by a dot subcategory, ठीक है. That's it. So here what we have find out, each and every subcategory have their total sales. Here what I will do right now, where region equal to east, ठीक है. That's what we are doing. What we have done, we have done the filtration part in region, ठीक है. This is the first thing. We have find out the aggregate values for sales, ठीक है. And there is the subcategory, मतलब as per subcategory we need to find the output, that's it. And when we do the execution part, this is what we have got. For the east region, this is what we have got, like total sales per subcategory, ठीक है. That's the thing, simple as it is. So I hope you got it till here. Anybody have any doubts till here, you can ask your doubts related to this. We have just taken care of the subcategory, we have just taken care of the sales, we took care of the region, so region equal to east, that's it. And group by subcategory, why group by, because we need to find the output in subcategory point of view, and also we have used the aggregate functions, that's why we also need to take care of group by, that's it. So till here anybody have any doubts till here, you can ask your doubts, like anybody have any doubts till here, please ask your doubts in the live stream. Anybody have any doubts till here? Anybody have any doubts still here, please ask your doubts. So please ask your doubts still here. Anybody have? Please ask your doubts. Hey, hi Anil. Welcome to live stream. Hi Anil. So we have one query like beginner हूँ कहाँ से start करूँ? See, first thing first, I would suggest related to data analytics. First start with SQL, ठीक है. Second go for Python.
पाइथन पूरा नहीं करना है आपको, पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक्स, और कोई भी एक बीआई टूल आपको टेक केयर करना पड़ेगा। बीआई टूल मतलब कोई भी आप ले सकते हो, पावर बीआई या टैब्ल्यू, एनीथिंग यू कैन, ठीक। अब सीक्वल में आपको ज़्यादातर क्या क्या टॉपिक कवर अप करना पड़ेगा, सीक्वल और पाइथन में आपको ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग यू शुड हैव गुड नॉलेज इन बोथ सीक्वल एंड पाइथन, राइट। तो सीक्वल में आपको बेसिक्स में ज़्यादातर सिलेक्ट, रिलेटेड फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, इसके कॉन्सेप्ट और लॉजिक को आपको टेक केयर करना है रिलेटेड टू सीक्वल। देन उसके बाद जब आप इंटरमीडिएट लेवल में जाओगे, इंटरमीडिएट लेवल में आपको सी टी ई, सब क्वेरी, जॉइंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, ये सब चीज़ें कवर अप करना है। फिर एडवांस लेवल में आपको विंडोज़ फंक्शन, और विंडोज़ फंक्शन के अंदर जितने भी रोज बिटवीन रिलेटेड क्वेरीज हैं उसको कवर अप करना है, राइट। दैट्स द थिंग। तो स्टार्टिंग विथ सीक्वल, देन मूव टू पाइथन, देन फॉर पावर बीआई। एक्सेल का बेसिक नॉलेज होने से चलेगा, रिलेटेड टू एक्सेल अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, गुड टू गो। एंड आई होप कि बेसिक नॉलेज तो आई नो सबको आता है। इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि कितना नॉलेज रहना चाहिए एक्सेल का, यू कैन टेक क्वेरीज फ्रॉम दिस। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी, भाई एक्सेल नहीं सीखना है। ओके, अगर एक्सेल आई होप आपको आता होगा बेसिक्स, तो गुड टू गो। तो ऐसा नहीं है, अगर बेसिक्स आता है देन गुड टू गो, नो वरीज अबाउट इट, बट एटलीस्ट बेसिक्स आप कवर कर लो, ठीक है। एक्सेल का एटलीस्ट बेसिक्स आप कवर कर लो, क्योंकि मैं जितना भी लाइक ज़्यादातर जो पुराना कंपनी है उसमें बहुत एक्सेल का यूज़ हुआ है अमेजन में, मतलब लाइक माय लास्ट कंपनी, उसमें ज़्यादातर आपको जितने भी मेल्स वगैरह है ना, जितने रिलेटेड टू द लास्ट रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट, वहाँ पे आपको एक्सेल ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट। दैट्स द थिंग। और एक्सेल रिलेटेड बेसिक्स ही कवर करना, और बेसिक्स तो आता ही होगा नो डाउट, बिकॉज आज के डेट में बेसिक्स एवरीबडी हैव गुड क्वालिटी नॉलेज फ्रॉम दैट, सो नो वरीज अबाउट इट। बट हाँ, सीक्वल, पाइथन और कोई भी लाइक पावर बी आई, टैब्ल्यू में से कुछ भी सीखना हो, यू कैन गो विद इट, राइट। दैट्स द थिंग। एक्सेल का बेसिक्स इज गुड टू गो। और लेट्स सी, ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी। इंग्लिश ज़रूरी है टिल इंटरव्यू तक, मोस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। इंटरव्यू कवर करने तक ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। बस इंटरव्यू में अगर आप प्रॉपर बता देते हो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में या तो वर्क एक्स के बारे में, दैट्स इट, गुड टू गो। उसके बाद उतना ज़रूरी नहीं है, एक बार आप कंपनी में घुस गए तो उसके बाद नॉर्मल टॉक्स, हिंदी इंग्लिश जैसे बात करना है, यू कैन गुड टू गो टिल इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू कवर करने के लिए बेसिक्स इंग्लिश ज़रूरी है। बेसिक्स मतलब ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा एडवांस लेवल आना है या तो इंटरमीडिएट या एडवांस, वैसे आना ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स गुड टू गो है, ठीक है। जस्ट बेसिक्स, और बस आपको इंटरव्यू क्लियर करने तक, राइट। इंटरव्यू क्लियर करने तक यू नीड दैट मच इंग्लिश, ख़त्म बात, राइट। तो उतना स्ट्रेस नहीं लेने का है इंग्लिश में, उतना स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप कॉन्सेप्ट सामने वाले को समझा रहे हो प्रॉपरली, फिर ठीक है, गुड टू गो भाई, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। और कुछ पूछना हो आपको,
इधर लाइव स्ट्रीम में कुछ रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स। बाकी प्रोजेक्ट वगैरह रिलेटेड कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ अगर पूछना हो तो। ओके वी हैव वन मोर कोई फ्रीलांसिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई। अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो अभी टोटल मैं 8 क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ। आई मीन टू से टोटल 7 क्लाइंट्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ। अभी एक जो क्लाइंट है उसके साथ अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो टोटल 8 क्लाइंट्स के साथ काम कर चुका हूँ मैं। और साथ ही साथ अगर कॉरपोरेट फील्ड में बोलो तो 5.5 ईयर्स का वर्क एक्स है 3 कॉरपोरेट कंपनीज में, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर ही मैंने रेजिग्नेशन दिया अमेजन से और अभी फुल टाइम फ्रीलांस के लिए काम कर रहा हूँ, क्लाइंट के लिए। और हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा दैट इज़ करेक्ट। फ्रीलांस से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई मतलब कुछ प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। वो आपके वर्क एक्स में भी काउंट होगा और आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है। दैट्स द थिंग। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप फ्रीलांसिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। ओके वी हैव वन मोर क्वेरी। हाय सतीश, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। तो भाई स्टैट्स और मैथ्स का कोर्स करवा दो। ओके ठीक है, लेट मी टेल यू वन थिंग रिलेटेड टू स्टैट्स एंड मैथ्स मैथमेटिक्स। सतीश, द थिंग इज अगर आप डेटा एनालिटिक्स के लिए पढ़ना चाहते हो तो 10th का मैथ्स मोर देन इनफ। डेटा साइंस के लिए करना है तो 11th और 12th का मैथ्स नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको किस लेवल, मतलब आई मीन टू से कौन से डोमेन में आपको जाना है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग, कौन से डोमेन में आपको इंटरेस्टिंग आई मीन इंटरेस्टेड हो आप बता सकते हो, ठीक है। दैट्स द थिंग। ओके वी हैव वन मोर क्वेरी। रेज्यूमे कैसे बनाए भाई? रेज्यूमे नॉर्मल आई वुड से 1 to 2 मैक्सिमम 2 पेजेस का होना चाहिए रेज्यूमे, ठीक है। मैक्सिमम 2 पेजेस, डजेंट मैटर आप फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस हो, नो वरीज अबाउट इट। और उसमें ज़्यादातर जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स रहेगा आपका उसी को आप एडअप करो। बेस्ट प्रोजेक्ट मतलब किस तरीके से, देखो जैसे कि डेटा एनालिस्ट क्या है, हर डोमेन में रहता है। आप कोई भी हॉस्पिटलिटी डोमेन में जाओ या तो फूड डोमेन में जाओ या तो रिटेल में जाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, डजन मैटर वो सिंगल टूल यूज्ड हो या तो हाइब्रिड बेस्ड हो, जो भी बेस्ट प्रोजेक्ट है 2 से 3 जितना हो सके, मतलब जितना आपके 2 पेज के अंदर आ सके आपका रेज्यूमे में उतना ही प्रोजेक्ट ऐड अप करो, दैट्स इट, ठीक। और प्रोजेक्ट किस बेसिस पे शो करोगे, मतलब किस तरीके से, सबसे बेस्ट तरीका है आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए उस पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपने फेस किया होगा, राइट। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चैलेंजेस या रिक्वायरमेंट आपने फेस किया होगा। तो उस चैलेंजेस को आपने कैसे हैंडल किया, आपने कौन सा लॉजिक यूज़ किया, क्या क्या टेक्निक्स आपने यूज़ किया, कौन सा टूल्स आपने यूज़ किया। सपोज आपने सीक्वल के थ्रू ही इस चैलेंजेस, मतलब जो भी चैलेंज आपने फेस किया उसको आप कवर अप कर दिए, या तो आपने क्या किया, पाइथन का यूज़ किया प्लस सीक्वल का यूज़ किया, देन वो चैलेंजेस कवर अप किए। तो वो आपको लिखना है, मतलब क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और उस चैलेंज को या तो उस क्वेरी को कवर अप करने के लिए आपने क्या लॉजिक या टेक्निक्स यूज़ किया है, वही उस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ओके वी हैव वन मोर क्वेरी सतीश डीए। सो डेटा एनालिस्ट के लिए बेसिक्स आपको आना चाहिए कौन कौन से चैप्टर का, ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स का आना चाहिए,
प्रोबेबिलिटी का आना चाहिए, दैट्स इट, उतना ही, मोर देन एनफ। और बेसिक्स मतलब कितना, क्लास 10th तक का मैथ्स, दैट्स इट, ओनली क्लास 10th, ओनली क्लास 10th, ठीक है, दैट्स इट। तो एनसीईआरटी का अगर आप कवर कर दोगे, गुड टू गो भाई, गुड टू गो, नो वरीज अबाउट इट। लेकिन ये दो चैप्टर कवर अप कर लेना, दैट्स इट। मतलब 11th-12th में उतना एडवांस जाने का ज़रूरत नहीं है अगर आप डेटा एनालिटिक्स डीए के लिए एस्पायर करो, लाइक एस्पायरिंग डीए हो तो, ठीक है। 10th तक का मैथ्स गुड टू गो, राइट, वो भी अगर एनसीईआरटी बुक आप कवर अप कर लिए तो मोर देन एनफ है, नॉलेज बेसिस, दैट्स इट, दैट्स द थिंग। तो और किसी को कुछ भी डाउट्स लाइव स्ट्रीम में आप पूछ सकते हो। और रिलेटेड टू मैथ्स अगर आपको कुछ देखना है किस तरीके से क्या क्या मैथ्स यूज़ होता है, तो यू कैन डायरेक्टली डू वन थिंग। आप एक मिनट, पाइथन, हाँ, पाइथन विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट, इस पे आप जा सकते हो सतीश, इस पे आपको मिल जाएगा। और पाइथन प्रोजेक्ट में भी आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का मैथ्स चाहिए, उतना टॉप लेवल नहीं चाहिए, नॉर्मल ऑफ द बेसिक्स ऑफ द मैथ्स हो जाए चलेगा, ठीक है, दैट्स द थिंग। ए हाय आयुष, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। तो वी हैव, आई जस्ट सॉ योर पार्ट 1, बट नाउ हाउ कैन आई एक्सेस पार्ट 2? पार्ट 2 का लाइक उसी प्लेलिस्ट में ही है, टू बी ऑनेस्ट। लेट मी गिव यू द लिंक, एक मिनट, मैं जस्ट आपको लिंक भेज देता हूँ प्लेलिस्ट का। उसी प्लेलिस्ट में ही आपको पार्ट 1 पार्ट 2 सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये प्लेलिस्ट है भाई आयुष, दिस इज द प्लेलिस्ट। और आपको अगर पार्ट 2 रिलेटेड चाहिए तो वो भी मैं भेज देता हूँ। हाँ, पार्ट 2 कहाँ गया? हम्म, तो ये है अपना पार्ट 2 का प्रोजेक्ट, ठीक। ठीक है, सो आयुष यू कैन टेक केयर ऑफ दिस, ये पार्ट 2 प्रोजेक्ट है, ठीक। ओके, वी हैव वन क्वेरी फ्रॉम सतीश, पाइथन के बाद कौन सा लाइब्रेरी पढूं? अब पाइथन में ही एक्चुअली जो लाइब्रेरीज का आप बात कर रहे हो, वो पाइथन जितने भी लाइब्रेरीज है वो पाइथन में ही रहता है। तो आपको क्या क्या लाइब्रेरीज एक्चुअली फोकस करना है? नमपाई, पैंडास, ये मैं डेटा एनालिस्ट डीए के लिए बोल रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, ठीक है। इतने अगर आप कवर कर ले तो लाइब्रेरीज गुड टू गो, ठीक है। और ये पाइथन में ही है, दैट्स इट। और पाइथन के बाद क्या करना है, मैं बोलूँगा कोई भी एक बीआई टूल पकड़ो जो भी आप कंफर्टेबल हो जिसमें, जैसे कि पावर बीआई या तो टैब्ल्यू, एनीथिंग यूर गुड टू गो। ओके, वी हैव वन मोर क्वेरी, पार्ट 2 मेंबर्स ओनली है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेट मी सी, ये तो पब्लिक है, ऑल पब्लिक, चेक दिस वंस। ये तो मैं भेजा हूँ आपको लिंक, 4 वीडियोस होंगे, देखना प्लेलिस्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ, ऑल एंड फॉर, मतलब मेंबर्स के लिए भी है एंड फॉर एवरीवन भी है, ठीक है। तो मैं पार्ट 1 आपको भेज देता हूँ, पार्ट 1, this is part 1,
दिस इज पार्ट 2, ठीक है। और मेंबर्स वाला ही भेज देता हूँ, पार्ट। मेंबर्स वाला अलग है, मतलब आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। आई एम जस्ट सेंडिंग, दिस इज मेंबर्स वाला पार्ट 1, राइट। एंड दिस इज मेंबर्स पार्ट 2, ठीक है। दैट्स द थिंग, दैट्स इट। तो आयुष एक बार चेक कर लो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिलेटेड टू दिस। तो आयुष, आई होप यू कैन चेक दिस आउट। हमने सारे लिंक्स सेंड कर दिए हैं अपने लाइव चैट पे, जस्ट चेक वंस। Okay, we have one query. Let me. Okay, so end-to-end deep learning is part 2, and stock LSTM is part 1. Let me just cross-verify it once. So stock predictor with LSTM. Stock LSTM is part 1, correct. And end-to-end deep learning is part 2, correct, right. Let me see. Okay, we have one more query. So they both conclude complete project. Actually, there is part 3 as well. There is part 3 as well, and maybe there is part 4. Do you know the reason why I'm doing this in part 3 and 4? The thing is कि one of my friend who is actually data scientist in Amazon, he is helping me out, ठीक है। So I am not that much good in data science, I am good in data analytics, so he is helping me out. So whenever he is getting time, he is just teaching me about all those stuffs that you will see in the video. And after learning from him, I had made the explanation part
plus project conclusion part. ठीक है, so it is like that. So that's the thing. So it is like मतलब the thing is, see, the thing is, for data science I have not done any project till date, मतलब in for my YouTube channel. So that's why I am dedicating my full time, and I am just giving good quality time to data science project right now. So part 1, 2, 3 and 4, maybe till part 3 will be the last, maybe. Let's see if my friend is just giving me that much explanation, then it's okay to stop till 3. I mean, stop matlab give all the requirements till 3. But if there is huge knowledge requirement, then we can move to step 4, matlab part 4 as well. Okay. And why part like this? The thing is, you should, everyone, those who are watching those videos, should give at least 1 month time to understand the topic, see each and everything, how things work behind the scenes, how actually data scientists work in real life scenario. Then only you understand the topic and use that in your project, right? That's the thing. That's why I am just giving good quality amount of time, like 1 month time, to everyone, just to digest the project properly, then move to the next part, right? That's okay. Yeah, you told before. Thanks. Chalo, thank you, bhai. Welcome, bhai. So let's see. Okay, we have one more query. Yeah, it seems difficult for someone with basic DS skills. Bro, let me tell you one thing. It is really difficult for me as well, because let me just, because the thing is, the amount of knowledge he is transferring to me is really tough, because I need to ask him why we are using this syntax, what's the use of the parameter here, what's the use of parameter there. Why I am asking this to him? Because I also make sure you all people also understand those things in the video. So as much as information I ask him, that information can be transferred to you all people. That's the reason. So it is taking good quality amount of time to make myself comfortable to data science, so that I can make you all comfortable in data science project. Okay. So it is just like transferring knowledge. He is transferring knowledge to me, and I am transferring knowledge to you all. That's it, right? Because the thing is, this is just one project we will be doing this, we will be doing for data science this year. That's why I'm saying. So why not to keep our 200% in this, right? Because data science is actually tough, to be honest, actually tough. And also I told him, see, if you check all my projects, I have been fully dependent on libraries, right? I have not used anything like if, else, function, or loops. Anything I haven't used. Okay. If I would have used it, the project would be very small and it would be very easy. As I have told him, everything should be 100% dependent on libraries, right? Okay. Because I know most of you, including me, we are like not good at all these loops, and all these are like lots of logic building things are required. Okay. So if we have libraries in Python, why not to use them? So as instructed to him, I told him it should be strictly dependent on libraries, each and everything. So he is also taking that much amount of time ki what logic can we build, so that we would be always dependent on libraries and find the output, right? That's the thing. And if you see my other project, I haven't used any like if else kind of thing, for loop kind of thing. I haven't made any functions as well, not def, nothing, not even use
Lambda, nothing I have used, right? I have used nothing. I am just fully dependent on libraries. That's it. That's the thing. So it is a bit challenging for him as well, because he is fully dependent on the loops and all. So it is bit challenging for him because he had to make up his mind, and he also need to take care of the libraries part, so that he can educate me and I also can educate you all. So that's the thing. So let's see, do we have any more things to cover up? Let me check once. Okay, we have one more query. Yeah, not too good with Python libraries, but yeah, you can do it and make use to learn DS. No worries, libraries related. It is just you need to learn the syntax. What's the syntax? What parameters are required to fulfill the syntax? And once all the parameters are covered up, you can get the output, right? That's the thing. And all these things can be taken care with the help of practice. That's it. That's the thing. That's us. Okay, yeah, yeah, I understood. And make us also learn DS, right? So it is just like learning phase for both, for you all people and me, same. We all are learning, and really thanks to my friend. But the thing is, as I've told in the video as well, like he is a shy kind of guy. He don't want to, matlab, don't want his name to be cover up anywhere, not in LinkedIn, not even in the project. I don't know why, or I would have bought him in the project and would really thanks to him. But anyways, let's see. If he is comfortable with the camera, then we can bring him in the project as well. Yeah, thanks, bro. Yeah, welcome, bye, welcome. Uh, let's see, do we? And the main thing in the project, apart from that, is taking the full use of API. That's the best thing. What I believe. What means, if you ask me what is the best part in the project, I would say the use of API, right? And this API that we are using is fully accessible to anyone, not encrypted. First thing first, accessible and can be understandable to everyone, right? Related to stocks, I mean to say, even though if it is not, I mean, if anyone is not comfortable with the stocks, that too I have made sure you all understand about those stocks prices, what is opening, what is closing, what is high, what is low, each and everything. That too with the use of internet, I mean real life scenario. Okay, that's the thing. मतलब real life scenarios and all. Yeah, I saw how you imported stocks data with API. Correct, correct, correct. And thanks to Yahoo Finance as well. First time in my life, I'm thankful to Yahoo. Let me tell you. फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव नेवर न्यू कि याहू का यहाँ पे हेल्प आने वाला है. अर्लियर आई यूज टू थिंक वाई याहू इज देयर when everybody is having their Gmail account and all. Now I came to know how Yahoo is helping us. But anyways, thanks to this,
and that's it. That's the thing. Let me check once. Let's check this out. Okay. So, okay, it's 10 o'clock right now. So, let's close the live stream right now, and let's close the live stream, and let's continue with a new live stream tomorrow with new doubts and new challenges. And if you have any doubts related to project, you can ask me out in the live stream as well. And also we have comment section open. I will reply to each and every comment. Okay, once it is visible I will reply it. Okay, that's the thing. So let's close the live stream right now, and thank you everyone for joining the live stream and asking me doubts. Thank you for this. What happened? Yeah. And also good night everyone. Okay, good night Ayush. Good night and bye bye everyone, and let's meet tomorrow again in the new live stream.